की अमृत बानी शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम दीपावली की शुभकामना। और आज गौवर्धन है तो मुझे लगा कि ज्ञानवर्धन उसी हिसाब से होगा। और जब विजय हैं और अपने आप में कुमार हैं और प्रशिक्षण का मामला है, तो एक चीज जो लगता है कि प्रशिक्षण को मैं हमेशा, जो इनका विषय है, प्रशिक्षण यदि नहीं होता है, लर्निंग और रीलर्निंग नहीं होता है और इसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो कहीं गलत चीजों में उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने इसको इस तरह से तैयार किया है। और आज बड़ा सुंदर, वैसे भी दिन है, सब दिन बहुत सुंदर होता है, लेकिन आज विशेष बढ़िया दिन इसलिए है कि हम लोग इसके बाद सूर्य की भी आराधना करने वाले हैं। तो समग्र ज्योति के साथ बिल्कुल सनशाइन और मूनशाइन सारी चीजों को लिए हुए आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। ये प्रशिक्षण और ज्ञान की दुनिया में, और हम अमिताभ साहब से आग्रह करेंगे कि जाना है दाना है रखनाया। ये प्राचीन काल से कहा जा रहा है। राम रावण के युद्ध में भी अंत में राम ने यही कहा था, जब रावण के बहुत सारे चैलेंजेस को, कि आपके पास में बहुत कुछ हो सकता है, आप धन बहुत है, ज्ञान बहुत है, बल बहुत है, लेकिन वो किसी के रक्षा और कल्याण के लिए नहीं है। मेरे पास में भगवान राम ने अपने कहा कि भले ही आपसे कम हो, लेकिन वो रक्षा के लिए है, वो वर्धन के लिए है, संवर्धन के लिए है। तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इन्हीं भावनाओं के साथ जब ज्योतियां चमक रही हैं, आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी बाल बच्चों ने उसी हिसाब से तैयारी की है। तो जगमग रोशनी के बीच में ये ज्ञान का प्रकाश जो लेकर के आए हैं, प्रशिक्षण का प्रकाश, उसकी आतुरता और बेहबलता से हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि उसको समझें, समीक्षा करें और जीवन के संपूर्ण आयाम में इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को आलोकित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए और ज्ञान और प्रशिक्षण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। वी आर नॉट merely delighted, but we are delighted that you have accepted the invitation of Amitabh ji, who is such a bright scholar himself, and the galaxy of people who have assembled together to learn together. तो संगत्थाद्वा संबदद्वा संभो मनासि जानताम देवा भाव यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्यते। तो इन्हीं शब्दों के साथ अमिताभ जी, अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विजय की पूर्णता को साथ लिए हुए उमेश, ओंकार, विनय और हिमांशु जी की भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सुंदर आशीर्वाद मिला। ओंकार नाथ उपाध्याय जन जागरण संस्थान के प्रेसिडेंट, वो भी आए ओंकार जी हैं भी आज इस समय लखनऊ से। उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत ओंकार जी स्वागत कर है। जी, बहुत बहुत ओंकार जी स्वागत है, बहुत दिन बाद आप साहब आए। सबको नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आप प्रणाम आते ओंकार जी। रहिएगा, हम लोगों का हिम्मत बढ़ता रहेगा। अच्छा नाउ, ये बहुत टेक्निकल प्रश्न है कि हम लोगों, कमल पीयूष आप भी दिल्ली से आ गए। इसका ये ट्रांसपोर्ट की दुनिया में बहुत अच्छा अपना कंसल्टेंसी कर रहे हैं। कमल पीयूष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर। और अभी हम नमस्कार सर। हमारे एक्सपर्ट जो मास्टर ट्रेनर भी हैं और आईएएस भी हैं, हिमांशु चौधरी साहब से दो शब्द हम लोग सुनना चाहेंगे कि क्या ट्रेनिंग में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नंबर टू, और मतलब क्या इससे लाभ होता है या लाभ नहीं होता है।
मतलब ट्रेनिंग करने से लोगों को लाभ होता है या नहीं होता है? ये तो हम लोग जानते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का आर्ट हम लोग ये ट्रेनिंग से सीखते हैं। तो एज एन मास्टर ट्रेनर ऑफ डीओपीटी एंड देन एज आईएएस ऑफिसर ऑल्सो हम उनसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। हिमांशु चौधरी साहब। हिमांशु चौधरी साहब। गुड इवनिंग अमिताभ जी। आपने दोनों क्वेश्चंस किया, तो सेकेंड पार्ट के लिए तो मेंढा साहब बताएंगे, विजय जी, कहे कि उन्होंने उसके लिए है, उसका बोलने के बाद मैं चर्चा करूंगा। लेकिन so far as the first point is concerned, whether we should invest in training or not, I require take attention of all the members here that the National Training Policy 1996 and thereafter the National Training Policy 2012, both the training policies has earmarked that training is an investment, and that's why in that training policy in 1996 1.5% of the salary budget was proposed to be earmarked for training. Similarly, in 2012 that 1.5% was increased to 2.5%. So far as the government of India is concerned, they are very focused about training is an investment, and as training is an investment, so they have make it mandatory. Mandatory not, they have appealed to all the departments that 1.5%, or rather as on date it is 2.5% of the salary budget, that should be kept aside for the purpose of training. And training and development, these are the two terms that are very linked. So with this, I request Vijay ji, please start your presentation, then we can discuss on it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And I will request now Vijay Menda Saab to start. No, Sonia Mukhi, perhaps from Bombay, she has joined. No, तो सोनिया मुखी साहब आपका भी स्वागत है और विजय कुमार मेंढा साहब से रिक्वेस्ट है कि अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और हमारे नैनीताल के जो लोग हैं और बाकी जो लोग हैं सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। ये ट्रेनिंग के संबंध में है और आप लोगों ने इसकी पढ़ाई भी की है। अभी अभी हम लोगों ने 2-3 कोर्स करवाया वहां पर, तो उसके सब लोग आएंगे। कमल पीयूष आप भी आए हुए हैं, तो उनका भी राय हम लोग लास्ट में लेंगे। तो मेंढा साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो शुरू करें। थैंक यू अमिताभ सर। सभी को मेरा प्रणाम एंड स्पेशली मेरे और हमारे मास्टर ट्रेनर उमेश जोशी सर, जिनकी वजह से मेरा जो ज्ञान का जो वार हुआ है और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उमेश जोशी सर के पास। सर प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम जो बात करेंगे, टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, लेकिन हम ट्रेनिंग के डिफरेंट पहलू देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे सर ने कहा, हिमांशु सर ने, am I pronouncing it rightly sir? Himanshu or Himanshu? It is Himanshu. Yeah. Himanshu. Yeah, okay sir, because that I can see it's G there. Yes. Yeah, so Himanshu sir ने बहुत सही कहा कि Government of India is treating as an training is an investment. So इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि ये बहुत सही स्टेप है and it has been followed right from the 1996 training policy, and every state government has got it, the administrative training institute, ATIs, then CTIs, then state training institutes. As a policy matter, every state has got also the policy matter, and they have replicated this formula. Now there may be some implementation challenges or plus and minuses, but overall training is considered as an investment, and about 2 to 2.5% has been kept for that implementation of that policy. अब ये तो हुआ एक factual.
Now, with my experience of around 34 years in the services, I retired in June 2021 from Government of Maharashtra. And with the around 20 years experience in the DOPT training, very humbly I say that training as an investment is really a starter, and to the small extent it has produced results, but lot is to be done in that respect. And perhaps now they are taking it in a very new fashion of or new style of capacity building commission. Then I got Karma Yogi. So this is a continuous process. Investment is really in the terms of the change in the modules and the technology. But I will start from where, let's have this start from where what exactly is a training, because after my retirement, my passion is training. So I have, after retirement also, before also I was going into the, being in Mumbai, I was involved in the corporate training, in the institutional training, other than the government, semi-government, then public sector training. Now I am doing with NPCIL, National Nuclear Power Corporation of India Limited, ordnance factories and all. What I see is one point is that mostly it is considered as a compliance training, where there is a need for the improvement in the faculty and the facilities. So training as an investment is considered in the two aspects. One is efficiency of training and other is effectiveness of the training. One is related to the cost spent on the training, how efficient our resources are utilized for training, for conducting the training. And second is the effectiveness of training, of its application. So we will divide this into two: efficiency of training and effectiveness of training, and then we will come to some. यार तुम ज्यादा मारामारी मत करो. हाँ जरा प्लीज इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए सर. हो जाएगा, बुखार उखार कर देगा फिर. कमल जी जरा आप म्यूट कर दीजिए प्लीज. आई एम सॉरी. या तो after my retirement, I was associated with the Skill India, because that is the training in a sphere like employability skills training, which is really in the mass trainings. So there also I am a master trainer. So there are lots of people, like especially employable and entrepreneurial abilities. वहाँ पर बहुत कुछ मूवमेंट है ट्रेनिंग में, स्किल ट्रेनिंग में. And I'm also associated with them as a vocational training provider with Skill India. So I'll just speak from my experiences as the government training, as the Skill India training, as my private training. What I would request you, since we are few people, around 11 people, out of that 11, I see lots of trainers, especially Joshi sir, Himanshu sir, and from the training institution, I presume Puran Singh sir, all. Let's make it participative. वर्चुअल में बहुत कम स्कोप है, एंड स्पेशली गूगल मीट में कम स्कोप है. जूम में फिर भी हम ब्रेकआउट रूम्स कर लेते हैं. तो एक अराउंड 60 to 70 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में आई वुड रिक्वेस्ट to take it as a participative, and let's have an interactive thing. So Vinay ji, is Vinay there? Vinay Shukla ji, are you there? Okay, what I will do is I will present. Let's see. Yeah.
Is it visible now? Visible, clearly visible. Okay, okay. एक छोटा मैंने प्रयास किया है along with my team कि इन्वेस्टमेंट एज हिमांशु सर ने कहा कि नॉर्मली यूज होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट T&D और आजकल उसको और बोलते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट L&D. सो इसके ऊपर this is just my brief. I started with this. I just wanted to highlight this is a ask behavior which we are going to highlight and we are going to discuss about this. This is a base for the investment in training. This is when we say training, when we say behavior in the training, it is related to the attitude, skills and knowledge. तो ये कुछ SAT approach and other approaches this I have conducted in the industry. Now when I say behavior, ask attitude, skills, knowledge. Now, attitudinal training and to modify attitude is slightly difficult in the training conditions, but here we are doing like we are making prepared to do what to prepared to fill the gap. So motivating him, encouraging, inspiring him and change his thinking by modifying the knowledge and skills. I hope it is self-explanatory. Normally it is said KSA, but मैंने एक acronym बना के to remember, otherwise it is the standard is KSA behavior. Now this is a glossary of training terms की definition है. It's a planned process. Again, each sentence, each line proceeds with the end point. A planned process to modify ask behavior. Then weigh how through learning experience, then end point to achieve effective performance. Then where in performance in an activity or a range of activity to satisfy needs of organization. Okay, I have stopped the presentation. I just want to, because this is there are two words, investment and training. So we have just come to the training as a planned process. What do we mean by planned process? What is involved in that planning of the training? Let's for a few moments discuss this. What is this planned process all about? Menda ji, in my opinion, the schedule is there. Schedule is there, and accordingly we provide timings as per the task or contents to be discussed in the training. Therefore, we call it the planned process. Absolutely. So what is involved in the planning? What are the very few essentials thing when we plan some? And it's like a normal thing. When we plan for a home or when we plan for any trip or when we plan for any investment, what do we look into? To decide in advance how much money will be spent, who will be the trainer, who will be the trainee, to arrange everything in advance and work according to that schedule as Joshi Sahab has told. Absolutely. So Absolutely. where to be celebrated, where to be organized this training, how many people will be there, their study material and your putting arrangement, everything. PowerPoint presentation, everything, all arrangements in advance is called planned process. Absolutely, sir. Absolutely. I will just rephrase it in such a way that we have, do we agree that, yeah, Himanshu sir? You see, in my opinion, learning is a natural process. So the day on which we open our eyes, that is we Hello. Yeah, Abhay ji, mute, please. hello. Abhay Krishna Mishra ji. Yes, sir. I hope that Mute, yes, mute. sir. Yes, sir. आपके पीछे थोड़ा disturbance आ रहा है. हाँ. Yeah. Yes, sir. Yeah. So learning is a natural process,
and it starts the day on which we came into this earth, and it ends the day on which we close our eyes, finally. So this is one of the things. So learning is a natural process. So it took much more time to learn a particular, as you saying, Prepared. ask means skill or knowledge. It may take much more time. So in other aspect, that's why training is a planned process. What we learn in 30 days in a natural process, in training we can learn that thing, whatever Amitabh ji and Joshi sir has said, that we can learn it within 3 or 5 days as per the module and all these things. So this is my view. Absolutely, sir, you are correct. So I'll just rephrase in such a way that training plan means it has to be focused. With a particular, because when we say ask behavior, by Krishna ji, yeah, sorry. So we are focusing. So we just say in a very broad terms, there is the aim of the training. Suppose if I want to make a trip, so I should know that where I am going. That's why the planning will be there. Otherwise, जहां चले रास्ता वहां चल दिया. ये फिल्म डायलॉग ठीक है, फिल्म में ठीक है, या ऐसे ही ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग में से नहीं हो सकता. वी हैव टू फोकस ऑन द एम ऑफ द ट्रेनिंग. इसमें से हमको क्या चाहिए, जैसे अमिताभ सर ने चाहिए, व्हाट डू वी वांट. So we should be very clear about the aim, and then from aim flows the objectives. अब ये बहुत टेक्निकल है कि objectives are specific, aim is general. उसमें हम इतना नहीं जाएंगे, बट मोटे मोटे में हमको aim of the training और फिर aim के हिसाब से, for example, if I have to go to Calcutta, then accordingly what I will do, first I will see whether I will go for a flight or for the train or by road. Then what are the resources available for to me, and how much urgency is there to go there. Accordingly I will plan out my trip. So similarly training, जैसे अमिताभ सर ने कहा, चंद्रशेखर ने कहा, these all components, but मोटे मोटे में ये कि aim होना चाहिए. That's why a planned process. अब इसका aim क्या है? To modify ask behavior. And now what is the way? Through flight या जो train है, through learning experiences. See, we are dealing with the adult learning. We are not dealing in the especially children. And there is a term called, I think everybody is familiar, and मैंने तो सब महानुभावों से सीखा है, जोशी सर ने, this term called andragogy. जैसे it's opposite to the pedagogy. Pedagogy is the for the children's teaching. Andragogy is for the adult learning. So adults always want involvement. Adults always want learning through doing. So that is why learning experiences. तो हम जो sessions plan करते हैं, उसमें जो activities रहती हैं, they are always interactive, participative. इसके लिए मैं भी यहाँ पर with the constraints of the virtual constraint, I am using andragogical approach, because we all are adults and we all are full of experiences. So I want to share not my experience. See, this is not a very technical or a very software type topic, IT topic. यहाँ पर जितने हम सब contribute करेंगे, उतना हमें ज़्यादा हमारी knowledge and skills बढ़ेगी. So through learning experiences for achieving effective performance. And what is the last final? A planned process to modify ask behavior through learning experience to achieve effective performance. अब ट्रेनिंग जो होती है वो फोकस होती है एक या दो. We cannot give training to all the job responsibilities. And we call it task, a smallest unit of a work. जिसको भी हम ट्रेनिंग देते हैं या जिसको जरूरत है, जो गैप है, वो फोकस टास्क पे. Again, the start होता है the planned process. So it is focused on the task, and that task should satisfy the needs of the organization. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग की. तो जैसे हिमांशु सर ने सही कहा कि अगर हम नहीं करेंगे ट्रेनिंग, अगर हम लर्निंग इज एन प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उसमें हमारे 30 दिन चले जाएंगे, जबकि वही हम 3 दिन में कर सकते हैं. सो वी आर इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज
appropriately and we are saving the resources. Otherwise 27 दिन का हम जो इन्वेस्टमेंट है एंड उसका इफेक्ट भी हो सकता है कि अगर हम 30 दिन लगाएंगे, अगर नहीं सीखे या कम सीखें, यहां पर तो हमको ट्रेनर है सिखाने के लिए. So I hope that I have made the training as a concept, as an idea very clear. I'm just sharing it again for you. Just Amitabh ji, can we see now? Sir? Yeah. Okay. Now we come कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैंने जैसे कहा कि किसी टास्क पे, कोई भी टास्क लीजिए, उसका एक डिजायर्ड लेवल रहता है और जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये गैप आ जाता है. लेट अस टेक अ वेरी वेरी सिंपल, बहुत बेसिक एग्जांपल. टाइपिंग एज अ टास्क, डिजायर्ड लेवल इज 80 वर्ड्स पर मिनट. नाउ ही और शी, I will call it she because she includes he. So she is performing at 50 words per minute. तो वो गैप आ गया ट्रेनिंग में 30 words per minute. Now what are the factors responsible for this gap? पूरन जी, ये 80 words per minute कर सकते हैं वो, लेकिन 50 पे कर रहे हैं. कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? क्यों उनकी परफॉर्मेंस कम है? Environmental factor. Sorry? Environmental factor. Absolutely, very good. Can you elaborate on one or two aspects of environmental factor? That these factors are influenced by the environmental conditions. Absolutely, absolutely. उनका एनवायरमेंट ऐसे रहेगा, उनके थोड़े कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या रिसोर्सेज नहीं होंगे, या मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा मशीन का, या फिर अब बहुत सारे इन्वायरमेंट. वेरी गुड. और कोई फैक्टर्स है? और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर. नेक्स्ट इज, और कोई फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस? अभय जी. स्किल फैक्टर सर. यस सर. स्किल फैक्टर सर. स्किल फैक्टर, यस. इन्होंने अपग्रेड अपना अपस्किलिंग नहीं किया है. वेरी नाइस. और इसके अलावा हो सकता है, हमने एनवायरमेंट फैक्टर देखा, नॉलेज स्किल फैक्टर देखा. तीसरा फैक्टर हो सकता है और तीसरा मोटिवेशन लेवल. मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है. 100%. तो हमको मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, गलती होती है तो बहुत स्कॉल्डिंग मिलता है. अच्छा काम करते हैं तो और भी 10 लेटर दे देते हैं, इसको टाइप करो, उसमें गलती होने की चांस हो जाती है. वेरी नाइस. कमल जी भी यही बोल रहे थे विद मोटिवेशनल फैक्टर्स. कमल जी भी बोल रहे हैं. यस यस यस. मैं आपसे अमिताभ जी से इसलिए पूछ रहा था बिकॉज you know that factors very well and you are in the masters in that. But anyway, so these are the what we saw: environmental, motivational and behavior. When you say skill and knowledge, ask behavior, so that is the B factor. Now my question is, to improve the performance in the training, where should we focus? Kamal ji, should we focus on environmental factor more or motivational factor more or behavioral factor more? Puran Singh ji? I think basically, you see, I feel as a, I can say as a trainer myself. Yes. Environment is general, for that in any case something has to be done because environment is general for everybody. Absolutely. It can vary from person to person, and
my thinking is, you see, in case of a motivated person, all other factors become very, very nominal. Motivated person, irrespective of, sort of as was discussed, machine may not be good, environment may not be good, other people's behavior may not be good, but a motivated person can move on his own if he is passionate about his work. So I feel I put, motivation at the highest level. Okay, okay, you are correct from your perspective, but what is the when we give training, we saw definition of training, a planned process to modify task behavior. Motivation and environmental are external factors, or they are the organizational factors where trainer has got very limited access. So In that case, motivation training Performance in any case, my thinking enhancement is basically includes several to fill up factors. the gap between the expected level and actual level. And it has not much to do with motivation. It is basically skill based thing. absolutely, you are correct. Yes. As a trainer, my training as an investment, motivation trainer can't do it. Of course, in the sessions, motivation is required, learning environment is required, but that is different. Now we are identifying the needs Yeah. of the training. Yeah. So motivation actually does not fall in the purview of training. That is Absolutely, absolutely. by itself, somebody goes for training, he gets motivated automatically. Yes. Somebody If a trainer is prepared, is well prepared, and his delivery is perfect, then motivation has to be there. It will be there as a part of the. by itself, going for training by itself becomes a motivation. But definitely, it will happen automatically a little bit, and some part of individual trainer's capabilities brings about better motivation and improvement in the performance. That is given thing. But So what I want to say is that okay, investment in training, or the effectiveness and efficiency will be only when we focus on the behavioral aspects. That is on the especially on the knowledge and skills. So that is why I have. behavior and skills, it is more, as far as I understand, being in more in operations all throughout my life, I feel training is more to do with the improvement of skills and behavior. Absolutely. And because skills include the behavior. You are correct, sir. So that is why I have made this one assumption. Training is a solution and not the solution of all problems. So it is one of the solution and not the total solution. Absolutely. Training is only the part of some solution. And not the absolute solution of all performance problems. Yeah, absolutely. You see, training can be done when you assess training needs. When you assess training needs, it could be for various reasons. It could be for improvement of, sort of change of equipment, change of environment, new modifications required, or whatever, the organization, cultural changes, things like that. So, training by itself can do things for improving performance, but it is not a solution for all problems. Definitely. Absolutely, sir. Thank you very much for elaborating. So, as a training also has got some constraint. We have to identify that, because investment has to be, because investment is not only in terms of money, it is in terms of the lots of other resources are required. So we have to understand, when we say investment in training, we have to identify the training needs first. So that is why a planned process, we call it in a DOPT structure, systematic approach to training. Because lots of resources, lots of things have gone. So the first thing is identify training needs. Oh, sorry. Yeah. So these four factors are very important. Design, based on the identification, we design the training. When we design, means it's actually planning based on the needs, objectives, then learning experience sessions. Unfortunately, in India, we all do together, one person or a couple, but in Western countries,
the TNA person identifying is different, designer is different, and trainer implement is different, assessor is different. So they are itself in, and each thing requires some performance standards. So this we call it SAT steps is India. This is I have learned from this in the DOPT and from the Joshi sir and from the Mittal sir and from all Amitabh sir. I have just produced in the very short, because this we take around for 2 hours for this only in our DTS. So India से हम start करते हैं कि अब investment starts with I of training, I, and the identification of a training need starts with I. So now let's go to what is the importance? What is the importance of training? हिमांशु सर ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था. जरूरत क्या है? What is the significance of training and development? Why training and development is necessary? What are the results? What is the end point of training and development? When organization goes for मैं बोलूं क्या? Nagesh, normally I do not I interrupt. seek permission to tell you. नागेश जी, चंद्रेश्वर जी सब उसके बाद प्लीज आप बोल. मैं पहले बोल लेता हूँ. हाँ. उसके बाद नागेश जी भी. This will two approaches I will tell you. When you said about the other places, many of the foreign countries, many of the people from other countries came to us, to Tata, to benchmark what we are doing. We have planned a process that, like in food, the balanced food is far more. So create a balanced scorecard. Balanced scorecard, that what are some of the kind of things. Now, in food, whether you do anything, you have to take the balanced food. Now, other part is not merely move to reactive training, but proactive. Proactive training, yes. Before the thing happens, before anything has started, it starts with the training. So this I wanted to bring home, the difference between the other kind of places, even the government. Absolutely. That in majority of the case, just to bring my point, I create some word images. From the training, if you remove the T, it is raining. Good It is one. raining. When raining is there, then if we go for umbrella, तो थोड़ा तो भीग जाएंगे. Before raining has started, have training. So umbrella approach. Okay. These are the kind of things are going to come. These are the challenges. Challenge has not come. It's going to come before the rain has started. So prepare your home, have the protective processes. So in all the technology, before the technology comes, before any new concept of change comes, we geared up for the training. And since 50 years, I'm in this space. So you mean to say that investment has to be made before actually something happens? You see, and it's not that it's not known to the people. Alvin Toffler in Future Shock. Third way, yeah, the Future Shock. He proved to the world the LUR, L-U-R, learn, unlearn, and relearn according to the time. I'm sorry that I have taken your time. No, sir, absolutely. It's our pleasure that you are sharing. I have found in the very many organizations, वो आपने भी कहा खाना पूर्ति, कि वो करवा दिया, फूड फोल्डर सब हो गया, वो सब इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है. कपड़ा हम 5 रुपए का भी पहन सकते हैं और 5 करोड़ का भी पहन सकते हैं. बरोबर सर. Okay. How I am protecting myself. So that kind of approach everybody is given in the beginning one day, and that's how
I'm saying you the impact. In Tata Motors, Germans were asked that thank you very much that you trained us very well. We have equipped ourselves and now we are having this kind of thing. So much so the development says that we have created our biggest enemy through giving the training, but we are not responsible for that, that we have given them. The people were so interested in learning that in a record time, the complete kind of very nice presentation you have brought, the complete kind of ask. So Absolutely. I normally say that when we write ask, above you put T, task. According to the task, your attitude is there or not. According to the task, your skill is there or not. According to the task, you have the knowledge or not. Sir, actually, मैं task भी I take it as training on ask is a task. No, I'm telling you my kind of feel how we put forward कि आपका जो task है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो task है, Thank you. वो क्या मांगता है, उसके अनुरूप आपको मैप करना पड़ेगा. नागेश जी. Mapping. So I am sorry that no sir, it is only because of time. की वजह से और थोड़ा और गुरुओं को चांस देने के लिए मैं जरा नागेश जी को बोल रहा हूँ. Since the national people are over here, so in majority of the organization, reactive approach of training is there, unless and until we have the proactive and balanced scorecard. That's how people raise many kind of questions. Thank you for allowing me. No, sir, it's our pleasure. Last time there was some problem with me also, and later on when I had joined, some other problem came. It is very, very good that Amitabh ji has called you again, and we are deliberating on this. No, sir. I'm sorry to. No, sir, no sorry. But I have taken some time. No, sir. मुझे बम्बई या फिल्म की याद आ रही है. बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी कर ये तो बड़े-बड़े प्रोग्राम से ऐसे होते रहता है. नागेश शॉर्ट अपना के बारे में एक बात बता दें. He is the best faculty award winner of India. है ना? I know sir. ट्रेनर हैं और नंबर 2 इन्होंने ही हमें मास्टर ट्रेनर इथिक्स वैल्यू का बनाया है. हम और हिमांशु चौधरी साहब कलकत्ता में इनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं. ये हम लोग का एग्जाम ले चुके हैं. वेरी नाइस. बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया. वी आर लकी टू गेट हिम. यस सर, एंड ही इज आवर लाइक मेंटर. हमारे जो पूजनीय या आदरणीय हैं ये. यस सर. नागेश जी. Thank you. I have only 4 points. All are indicative, because just indicating those training investment, you all will understand. First, I am taking the case of Ramayana. In Ramayana, whatever Lord Rama was taught in the Gurukul, it was used by the entire episode of Ramayana. Number 1, Vishwamitra used in killing the great demon. And Rama, when he was in the forest tour after the permission of his father, he killed so many demons, and even the Ravan was killed only by virtue of the training given in the Gurukul to Rama. Now I am switching over to Mahabharata. In Mahabharata, you can take the individual case. Training has got 2 facets: organizational objective and personal objective. So in Ramayana, Rama was developed by I don't want to go in detail by Vasishtha and so many other gurus. Nagesh, these other people are also there. Can we have a brief of? Yeah. Yes, thank you. I'm sorry for that.
Yeah. Likewise, in Mahabharata, the target was Mahabharata war, and the Arjuna acquired all the techniques after coming from the Gurukul. That's all. Number 3 point. At present, Government of India has a special investment for ultra modern technology for the engineers, for the defense, and for the all technical area. And 2 or 3 such centers are developed in India. One was at HAC Ranchi, another was at Pune. And the objective of such investment was only once we import the new technology, our men should also use that technology to develop, to manufacture, blah, blah, blah. Absolutely. Number 4 point. Whatever we are investing in training for the civil servant, it is a tailor-made training, because without that training, all the trainees of civil servants cannot perform. Now I am coming to the last point where Chandreshwar Khan was awarded the best, mentor awarded, whatever, I salute him. In our corporate world, we see there are 3 types of training. One, you just join the company, induction training. In between, the training is a must only for those who are serious to learn. Because I have seen in my personal career that people don't have the inner urge to work, to learn, to perform. So you never say that without training you can do well. Because I work in my organization in a deep crisis in less manpower, so many challenges, so many problems are from all around. The chairman of the company questioned me as a live wire. Nagesh ko koi problem to ye solve kar deta hai. So my message is that training is there, but your inner willingness to learn new things, to face the challenge, this is also very important. Absolutely, sir. Last but not the least. I agree with you, sir. Last point. Training also has a psychological impact. कि हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये जो लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ये अपने आप उसके अंदर से एक फीलिंग डेवलप होती है कि हम कुछ नई चीज सीख के आएंगे, ये आएंगे. तो ट्रेनिंग कभी भी बर्बाद नहीं होती है, प्रोवाइडेड जो ट्रेनिंग लेने वाला वो आदमी सही हो. Thank you. Thank you very much for your valuable inputs. Now, since we are बहुत अच्छा input, very good. Thank. Okay, so we will go again on the sharing. These are some of the what we discussed all about the rapid development, then productivity, efficiency, customer satisfaction. The last I would want to highlight is prepare for future challenges. Chandreshwar ji sir जो कह रहे थे, यहाँ पर proactive trainings आती हैं. Preparing for disaster management, preparing for the technological changes, AI trainings. So इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत प्रोडक्टिव होती है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. देन इसके लिए इन्वेस्टमेंट शुड बी, बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ द एनी इन्वेस्टमेंट, it requires lots of preparation, lots of effort. तो उसको सही मायने में कैसे यूज करें, स्पेशली व्हेन इन द गवर्नमेंट, व्हेन द हिमांशु सर सेड कि 2.5%, which is a big amount. Now that is the public money, yours and mine money. So that is why this planning should be the first thing. Investment should start with identified training needs, as we saw in our India. Now normally हर एक जगह पूरा डिटेल्ड ये नहीं होता है TNA.
बहुत कहीं कहीं हैपेजल होता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत परफॉर्मेंस हैपेजल जो पीएमएस सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. देन स्किल्स गैप, स्किल इंडिया में ही ये यूज होता है, स्किल्स गैप एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है. देन एम्प्लॉई सर्वे, these are the two. Vijaykumar ji, sir, I want to supplement your idea. Ranchi, in one of the steel ministry corporate, Mekon Limited, in their ERP there is an inbuilt training need assessment, training design, and training everything, all the four that facet you have shown on the screen in presentation, it is inbuilt in ERP also, sir. Thank you. Absolutely, yes, thank you. Thanks for your value added, sir. So why I'm highlighting these are some of the tools, but the main thing is from there, from this observation also, we can, especially in the one-to-one, the coaching and other things, the training needs, of course, coaching is the method, but observation, if manager has got a keen, or a line supervisor or a head is keen, he can identify training needs. So this is the first step in this investment in training. These are some of the questions which Amitabh sir was referring and Himanshu sir was also referring, because investment is there, so appropriately it should be utilized. I will share the whole thing with, I have already shared with the Amitabh sir. Amitabh sir, you can share it in with all the members. Anything, communication? I'll share. And then based on that, these are some of the delivery methods. Classroom training includes, as it is in the design of training workshop, we take around 30, more than 30 plus. We have the discussion on that. But mainly I have chosen some very few, which gives the best return on the investments. There are lots of case studies, method also. Now, we have finished off the first part, efficiency. Like when we are spending cost, how good the training is conducted depends on the identifying training needs, designing and implementing. Who is the trainer? What are the resources? How it will be assessed? Everything. Himanshu sir, can you highlight some aspects what up till now what we have discussed in a short? थैंक यू विजय जी. आपने जो बोला है ठीक ही है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग में जो थर्ड सेंटेंस है, थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस, माने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हम लोग इसी जगह में चुकते हैं. क्यों चुकते हैं? व्हाई दे थिंक, लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक दैट वैल्यू एडेड टैक्स has been transformed into GST, Goods and Service Tax Act, in 2007. Yes. So, what all the government organization, particularly this taxation department, they have accordingly made proactive training, and how that is being linked. Linked means this value-added tax that is known to the officials, and how it can be implemented in the GST. So this learning experience, that is the big challenge for the trainer, and that learner-centered approach, that is also a big challenge for the trainer, because if we take learners present situation, in which condition they are working and what is their experiences, and from there on, if the trainer channelize to the desired things, that aim of the training you have said. So if we can think over that, then the training become much more effective. Effective means, I am telling you that I can vouch
that the learners who had undergone the training, they can easily being able to implement in their job situation. Not 100%, I agree, but initially it will be 30-40%, and they will develop, if we think Progressive. about the, Yeah, develop themselves, and they will develop absolutely. according to their own. Your experience shows and your knowledge in exposure shows, sir. This is the pain point in the training, the learning experiences. Normally, we use not the appropriate methods. That is why the training objective is not realized to the extent it should have been realized. And especially for this, we have this one another course of DOPT, Experiential Learning Training, ELT. And Experiential learning tools course. yeah, and there is we call it there in the Kolb cycle, experiential learning, where we experience first, we do learning by doing, and then deduct the points from there. But still, a lot of things, as you rightly said, lot to be done in that respect, because that is one of the gap in the investment where it is not realized because of that implementation of the learning experiences. Thank you very much, sir. So now we are going to the effectiveness of the training. Evaluation of training. The last part of the SAT. First, we identify training needs through the various tools, performance appraisal. Second, we designed based on the aims, objectives. And third, we implemented where we found out this pain point. The cycle ends with the assessment, because that is the main thing. Now here, as all of you might be know, and you are familiar with, there is a very famous model for the evaluation of training. Can anybody tell what is the name of that model? It starts with K. Puran Singh ji, aap hain? Kirkpatrick model of evaluation, which is a standard model to evaluate the training. अब तो इसमें बहुत सारी अपग्रेडेशन भी आ गया, but this is the base remains the same. इसमें 4 steps, 4 levels पे होती है. I have not mentioned specially Kirkpatrick model क्योंकि it's not very appropriate to relate to the model, because model का बहुत बड़ा scope है, and somebody should not take it in aspect. आजकल बहुत IPR भी है, matters है. So reaction. And now this is during the training. This is, we call it formative. जब sessions चल रहे हैं, we can immediately take steps. We can identify कि ट्रेनी ने कितना सीखा, लर्नर ने कितना सीखा, और क्या उसको और गैप है. This is the first very basic level during the training sessions. And this is at the end of the training. When वो IRQ करते हैं, feedback forms करते हैं, या कुछ ऐसे हम projects देते हैं कि कितना participants ने कौन से कितना नया knowledge skills सीखा, objectives कितने realize हुए. This is at the learning level. As Himanshu sir started that learning is a voluntary process, but learning training से हम जल्दी कर सकते हैं. So this is in that at the end of the training what we say, the trainees are able to do learning by doing, कितना new knowledge and skills किया. Now ये दो तो बहुत trainings में होता है, and काफी सारी investment यहीं पर होती है. अब इस investment के पीछे जो ट्रेनिंग यहीं पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, लर्निंग में ही या डिजाइन में ही हम कंसेप्ट बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स. जो ट्रेनिंग में सीखा वो कितना अप्लाई कर पाया और कितनी उसको चैलेंजेस आई. I'm just stop sharing. I just
want to have a 5 minutes discussion on what is the importance of transfer of learning in the training for the trainer, in the training itself. क्या होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं ट्रेनिंग के बाद में, इज इट नेसेसरी और इज इट वेरी इसेंशियल? It is the basic purpose of training, and the employer should also feel that there is a change after learning, change after training. So employer, suppose profit is reduced by 5 lakh, and by training we have enhanced the performance and 10 lakh profit improved. So this is practical use of transfer of learning observed by the observed by the client. So this is the basic benefit, and performance enhancement of the trainee is also observable due to enhancement of the performance level. No, so there was a tremendous change. So transfer of learning is very important for training, because this is the basic purpose. And one of the definition is also that the training is the process through which we transfer our knowledge and skill in an effective way, so that the learners may be equally qualified like the trainers, or even better than trainers. So this is the purpose. So transfer of learning is very important for training. Is it this is the actually में एक term है, Latin term, raison, I don't remember, raison d'intérêt, that is the base, as rightly you said. Transfer of learning नहीं होती है तो investment is like गई भैंस पानी में. The objective would be like that. The expenses incurred in any training, though, must be much lesser than the profit derived from the training. So, cost incurred in any training must be lesser than the profit derived from training. Then only training is effective. 100% सर, आई एग्री. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. अभी रिसेंटली मैंने एक एनपीसीआईएल में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 4 सेशंस किए. एंड सिंस इट इज अ वेरी प्लान्ड प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस, तो हम लोग 8 ले रहे थे, 8 फैकल्टीज, 1:8 रेशियो. डीओपीटी रेशियो इज 1:6, बट दिस वाज लाइक स्लाइटली अबव द डीओपीटी प्रोसेस. सो इसमें हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी एंडेड कि जो ये क्या सीखेगा और वो कैसे अप्लाई करेगा, एक्शन प्लान. एंड नाउ आई एम मॉनिटरिंग द एक्शन प्लान विद द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. So we have to see to it that transfer of learning takes place. We have to devise the mechanism, क्योंकि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है एंड काफी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ट्रेनर की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की. तो ये सब साथ में मिलेंगे तो ही, एंड जो लाइन सुपरवाइजर है, जो हेड है, दैट इज वाई दिस बिहेवियर का पार्ट तक हम ट्रेनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, लाइन सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है. नाउ यहां तक फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं, how, what is the correlation of this outcome with the training? ये कैसे हम एश्योर करें? हिमांशु जी, आपने एक एग्जांपल दिया टाइपिंग का. यस, शुरू में या 60 वाट्स पर मिनट कर रहा है, 80 वाट्स पर मिनट के लिए उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या सदा में भेजा था. ऐसा है ना. ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है रिजल्ट जो है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट पे देखेगा. दैट हिमांशु ज्योति चौधरी जिनको यशदा में ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, उन्होंने अभी 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर पा रहा है या नहीं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया. सो दिस इज द थिंग, result that is being visualized
from the viewpoint of the organization, this is one. And what Amitabh ji said, that cost benefit analysis, this is actually this productivity and that cost benefit analysis leads to evaluation. Means when there is evaluation, so and when as we are going with the set cycle assessment, so assessment means whatever the 4 parameters you have shown as per Kilpatrick model, so the last one will be viewed by the organization itself. That's my view. Absolutely, sir, you are correct. अमिताभ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि परफॉर्म इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग इसी से मालूम हुआ। नंबर 1 कि हम पहले 50 वर्ड्स पर मिनट टाइप करते थे और अब 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने लग गए। दिस इज द चेंज इन द परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व किया। एंड पहले क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे हुआ कि पहले 50 वर्ड्स में मेरे 10 गलतियां होती थी और अब 80 वर्ड्स पर मिनट में एक भी गलतियां नहीं होती। तो दिस इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑल्सो। इससे भी जज किया हमने और हमारे परफॉर्मेंस अच्छा हो गया और इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। और नंबर 2, हम बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बोलने से नहीं होगा, लेकिन मेरे पढ़ाने के पहले आपका मैथ में 100 में 30 नंबर आता था और मेरे बढ़ाने के बाद आपका 100 में 100 नंबर आने लगा। 100 में 100 नंबर आने लगा। तो दिस इज द इफेक्टिविटी। और नंबर 3 की प्रॉफिटेबिलिटी जो 5 लाख से कम गई थी वो हमने 10 लाख इनहेंस कर दिया। ये हमारे मुजफ्फरपुर में हम गए थे, हम जोशी जी भी गए थे, तो हम लोगों का मतलब हम लोगों ने डीटीएस कराया था और वहाँ के प्रोफेसर के परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया इसके लिए दोबारा वहाँ के हमारे डायरेक्टर जनरल ले जा करके वहाँ पे हम लोगों को सबका व्यू करवाए कि देखिए इन लोगों के परफॉर्मेंस में क्या बढ़ोतरी हुआ है और इसके हिसाब से कितना लोग मतलब एलन मिश्रा कॉलेज में कितने लोगों का नया एडमिशन आया और कितना लोग मतलब उसका रेपुटेशन और गुडविल में कितना इनहेंसमेंट हुआ। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग वेदर रिजल्ट वाज अचीव्ड और नॉट। और इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग में अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला जैसा कि हिमांशु साहब ने भी बताया, वेदर द कॉस्ट इंकर्ड इन एनी ट्रेनिंग इज लेस देन द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग इज नॉट, दैट इज टू बी सीन। तो इसलिए हम लोग डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग में कॉस्ट का भी एस्टिमेट बनाते हैं और उससे देखते हैं कि उसका बेनिफिट ज्यादा है या नहीं। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो झलक जाता है इंडिविजुअल, और 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद भी बहुत अच्छा झलक। अच्छा, अभी हमने जो देखा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो हमने वहां पर करवाया नैनीताल में देखा, तो हमने देखा कि सारे इनपुट्स को ये जो 6 दिन का कर दिया गया है, 6 दिन का कर दिया गया है, इस 6 दिन में पूरा नहीं हो पाता है। उसमें तीनों एक्सरसाइज जैसे बिहेवियरल वाला हुआ, सेल्स प्रॉब्लम हुआ और तीसरा अराउली हिल्स, और उसके बाद सब क्लाइंट्स को जा करके, और ये अप्रोच हमको मतलब बहुत जस्टिफाइड नहीं लगा। 6 दिन में पूरा लर्निंग नहीं जाता है। ये 2 सप्ताह का जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस था उससे लर्निंग जाता है और उसमें लड़के सीखते हैं और अराउली हिल से जो लर्निंग निकल के आता है उस लर्निंग को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करने में सक्षम हो पाते हो। जल्दी करवा के भेज देने से हमने देखा उसका इफेक्टिवनेस कम होता है। ये प्रैक्टिकल यूज ऑफ हम बता रहे हैं। टीएनए का पीरियड 6 दिन करना बिल्कुल मतलब अनजस्टिफाइड हमको लगा। वो डिफरेंट इशू, लेकिन हमारा जो एक जो सहमति बन रही है कि रिजल्ट्स जो हैं 60-80 वाले वो हमको, एंड बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट्स। और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं लाना चाहता हूं, आपको सबको मालूम है, आपको रेट। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, reduce error waste, improve quality, higher customer satisfaction, less wastage of resources. ये अगर कम हुए, ये tangible benefits हैं। So we as a trainer,
हमारे लिए एक व्यू है, एक दिशा है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो। एरर्स जो आइडेंटिफिकेशन जो हमने किए, फॉर एग्जांपल पहले 200 पीपीएम थे, तो हमारे ट्रेनिंग के बाद में वो अभी 100 पीपीएम है। सो मैट्रिक्स होने चाहिए। यहां पर जो हिमांशु सर आपने कहा ना, लर्निंग एक्सपीरियंस, और तो अगर वहां पर हम केयर करेंगे तो यहां पर हमारा इजीली हम कर सकते हैं। एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट में तो आजकल तो जमाना ही क्वालिटी इंप्रूवमेंट का है, कितना क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है। Vijay Kumar And ji, at intangible the end of your sir, Vijay Kumar ji, at the end of your presentation, I will share a unique experience of training of HEC. Sure, Thank you. yeah, thank you very much, sir. So अब हम this is the ROI, जो इन्वेस्टमेंट का रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। So these are tangible, these are intangible. And इस ROI के ये चैलेंजेस क्या आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के? बजट कॉन्स्टेंट्स, स्पेशली रेजिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि हम खास करके गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में अभी माहौल थोड़ा चेंज है, लेकिन स्टिल लॉट टू बी डन। एंड एज अ ट्रेनर वी शुड ऑलवेज हैव अ this type of a systematic approach, experiential learning, and we should always go to the deep of what is the business goals. Measurable goals को हम करेंगे तो हम challenges overcome कर सकते हैं। And technology leverage, that is the prominent, अभी बहुत आगे आ रहा है। सर मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने 2 जगह देखा है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन ही चैट जीपीटी बनाता है। आप खाली उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, बट स्टिल उसको समझाने वाला, उसको कराने वाला डायरेक्ट ट्रेनर चाहिए। तो हम कितना उसको लिवरेज करें सो दैट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी पॉजिटिव, प्लस देन ओनली द ट्रेनिंग विल बी गिवन अ प्रोमिनेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। So, I think with a very short thing, I have, and I am very thankful to Amitabh sir, पूरी webinar के team participants, all participants for heartily sharing their views, and बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैंने कुछ काफी सीखा, हमने कुछ डिस्कस किया on the investment of training, systematic approach to training, then identifying training needs, then implementing, assessing, return on, बहुत कुछ और टॉपिक में है, लेकिन वक्त के तकाजे से मैंने जितना मुझसे प्रिपरेशन हुआ मैंने किया। थैंक यू टू एवरी, और सबको फिर से हमारी दिवाली की शुभकामनाएं। अमिताभ जी, now over to Thank you, Menda साहब, thank you. Yeah. बहुत अच्छा लगा, बहुत। और क्या नागेश जी कुछ अपना शेयर करना चाहते कि शेयर कर लें? नागेश जी, फिर उसके बाद एक्सपर्ट कमेंट ऑफ चौधरी साहब भी सुनेंगे, जोशी जी का भी सुनेंगे। ओके विजय कुमार जी, एक्चुअली मैं जब HEC में था तो ठीक है ट्रेनिंग था, और अपने CMD का टेक्निकल सेक्रेटरी भी था, तो ये सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। yes, sir. तो हमारे HEC में जो परफॉर्मेंस सिस्टम है ऑफसेट्स का बड़ा गंदा था, तो हमें टास्क दिया गया कि भाई HEC की पूरी परफॉर्मेंस सिस्टम को बदलो। इसमें ट्रेनिंग हिडन है सर, लेकिन इसमें HEC का 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ, केवल मैं ही अपने पर्सनल लेवल से जो किया मैं सुना रहा हूँ। Okay. So new target was the implementation of new performance system, क्योंकि इसमें हर स्टेप पर ट्रेनिंग थी। तो मैंने कोल इंडिया, सेल, मेकॉन, रांची में जितने सारे के परफॉर्मेंस सिस्टम को एनालाइज किया, फिर जो अपना एक परफॉर्मेंस सिस्टम बनाया, और फिर मैंने उसको अपने डायरेक्टर पर्सनल को पर्सनली बताया। फिर डायरेक्टर पर्सनल के साथ
और फिर डायरेक्टर पर्सनल के साथ सीएमडी को समझाया तो वो लोग कन्विंस हो गए। अब प्रॉब्लम जहां थी, जो आपका इसमें ट्रेनिंग का जो इम्पोर्टेंट वो आ रहा है सर, अब उसको भी इम्प्लीमेंट करना था सर। तो उसके लिए मैंने जो किया, मैं इसका शेयर कर रहा हूं एक्सपीरियंस। मैंने तीनों प्लांट में जाके लोगों को ट्रेनिंग दी। यहाँ एक हिडन एजेंडा आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा डायरेक्टर पर्सनल साहब, आप खाली मेरे साथ बैठे रहिएगा, बकबक मैं करूंगा, मतलब ट्रेनिंग नागेश झा देगा, आप खाली चुपचाप वहां बैठिएगा। एंड ही ओबेड मी। उसमें जो नए परफॉर्मेंस सिस्टम में के अगेंस्ट में लोगों ने हर जगह, हर प्लांट में एक दो लोग ऐसे निकल गए जो कि एकदम रिवोल्ट कर गए कि नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो उसका बेसिक कारण यही था, वही लोग रिवोल्ट किए, उसी डिपार्टमेंट के लोग जो कुछ काम करते ही नहीं थे। अब नए परफॉर्मेंस में उसकी सारी एवरीथिंग वाज मेजरेबल, तो इसीलिए उसको भी इम्प्लीमेंट करने में फिर मैंने सबों को चेंज मैनेजमेंट पढ़ाया तीनों प्लांट में। और हर ट्रेनिंग में डायरेक्टर पर्सनल वाज विद मी कि चेंज मैनेजमेंट कैसे होता है। तो चेंज मैनेजमेंट में पढ़ा के फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज तक वो इसी में चल ही रहा है सर। तो इसमें जो मैंने लोगों से गालियां सुनी, जो प्रोटेस्ट सुना, तो वही मैं शेयर करना चाह रहा था। बट हर जगह ट्रेनिंग वाज रिक्वायर्ड टू द होल ऑफिसर्स ऑफ द HEC। थैंक यू सर। वेरी गुड सर। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि कभी नागेश जी का एक रखिए तो हम सुने पूरे डिटेल में। हाँ ठीक है, जरूर रखेंगे नागेश जी, अगली बार आपको रखना चाह रहे हैं, और मेंढा साहब के डिमांड में। लेकिन आज एक बहुत अच्छी खबर है कि गीता कांडपाल वो मतलब उत्तराखंड में ट्रेनिंग में अपना पूरा मतलब माहौल जमाए हुए हैं, वो हम लोग के बीच में मौजूद हैं। गीता कांडपाल जी, आपका स्वागत है। और आप नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपका भी सुनना चाहूंगा। टुडे डिस्कशन वाज वेरी गुड नो, और बहुत नॉलेजेबल रहा। और हमारे हिमांशु चौधरी साहब, जोशी जी और बाकी सारे चैनल, चंद्रेश्वर खान, सब लोगों ने जितना ज्ञान का आदान प्रदान किया नागेश जा, उसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे तो करिए। गीता कांडपाल के साथ मैंने नैनीताल में भी, आसाम में और कई जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। और लखनऊ में वाटर एंड सैनिटेशन का मास्टर कोर्स भी हमने गीता कांडपाल के साथ किया था। तो हम लोग वाटर सैनिटेशन में भी ये बहुत एक्सपर्ट है। तो मैं गीता कांडपाल साहब का भी कुछ शॉर्ट सुनूंगा, उसके बाद हिमांशु चौधरी साहब का भी सुनूंगा समरी। गीता कांडपाल। Thank you, sir. Thank you so much for adding me in this group. And sir, I joined late actually. मुझे थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। मैं कहीं थी तो मैसेज अभी देखा मैंने। लेकिन बहुत ही अच्छा डिस्कशन, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे जो डिस्कशन हुआ, या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो सर ने किया, विजय सर ने, तो ये बहुत ही लर्निंग मेरे लिए भी है सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ग्रुप को ज्वाइन करके। और सभी को दिवाली विशेष करना चाहूंगी, और सभी को नमस्कार भी करना चाहूंगी। जरूर जरूर। और मैं चाहूंगा गीता कांडपाल साहब, आप वाटर सैनिटेशन पर एक सेशन लीजिए हमारा भी, क्योंकि आप बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सर। एक्चुअली अभी तो मैं जल जीवन मिशन देख रही थी, तो सर इसमें अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। और अभी हमने लगभग पैन इंडिया करीब 22 स्टेट्स में जाके सर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, जिसमें कुछ तो देहरादून ही आए, और कुछ जैसे कोस्टल एरियाज हैं, या फिर ये हिमालयन एरियाज हैं, या फिर मिड जो हमारा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन सब में ट्रेनिंग कराई थी। तो सबसे पहली बात तो मैं देख रही थी कि सर इसमें लोग ट्रेनिंग से पहले प्री और पोस्ट रिवॉल्यूशन जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक बहुत अच्छा पार्ट भी हो सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एंट्री बिहेवियर क्या है, और जब वो ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो क्या अगर हम पोस्ट रिवॉल्यूशन क्वेश्चनर बनाएं तो वो एक अच्छा तरीका है जानने का कि हम कितना दे पाए। गीता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी सितंबर में रायपुर में था। जी जी।
सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड, जी सर। उनका नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट था हाँ जी। रायपुर, नया रायपुर में। जी 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 तो काफी जल जीवन मिशन से और जो अंडरग्राउंड वाटर से जो जी जुड़े हुए सब ऑफिसर्स थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। और वहां पर मैंने ये देखा एक नया कि प्री इवैल्यूएशन की ट्रेनिंग के पहले हाँ जी। प्री इवैल्यूएशन लिया गया और फिर उसी के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी जी। और पोस्ट ट्रेनिंग, क्योंकि आई वाज इन्वॉल्व विद द डायरेक्टर, वो जो कोर्स डायरेक्टर थी वो मेरी स्टूडेंट ये थी, लर्नर थी यशोदा में। जी जी विजय सर आप जानते होंगे, अमिताभ जी यशोदा में थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने प्लान किया। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है कि प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन होनी चाहिए। काफी कुछ इवैल्यूएशन हो जाता है सर कि कितना डिफरेंस आया। मैं कहूंगा बहुत बम्बईया लैंग्वेज में, कौन कितने पानी में है और कितना पानी बना। लेकिन गीता जी, लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हैं। एक मैं बोलना चाहूंगा, गीता कांडपाल ने एंट्री बिहेवियर के बारे में बोला और एग्जिस्ट बिहेवियर के बारे में बोला। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एग्जिस्ट बिहेवियर माइनस एंट्री बिहेवियर इज इक्वल टू लर्निंग। हिमांशु चौधरी जी और मेंढा साहब और जोशी जी, ये लोग सबको ये सपोर्ट करना चाहेंगे। बस हम लर्निंग की परिभाषा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया कि हम लोग मतलब थ्रू स्टडी, बाय एक्सपीरियंस और बाय बीइंग टोल्ड, व्हाटएवर वी लर्न वी अप्लाई इन द प्रैक्टिकल फील्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। वी रिमेंबर एंड अप्लाई इन द प्रैक्टिकल, दैट इज लर्निंग। और हमने एक बनाया कि एग्जिस्ट बिहेवियर माइनस एंट्री बिहेवियर इज इक्वल टू लर्निंग। क्या अमिताभ सर और सभी से मैं एक जरा एक रिक्वेस्ट, क्षमा चाहूंगा, बिकॉज ऑफ सम फैमिली कमिटमेंट आई हैव टू लीव। पहले इसके बारे में बोल लीजिए, इसका क्या क्या आपको पसंद आया ये थ्योरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आज के तारीख में बहुत रिलेवेंट है कि खाली ट्रेनिंग लेना ही नहीं, आइडेंटिफाई नीड्स करना ही नहीं, उसको कितना सीखा, कितना अप्लाई किया और उससे कितनी रिजल्ट मिली। बहुत सिंपल में मैं बोलूंगा, अगर मैं कलकत्ता, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मुझे कलकत्ता जाना है प्लानिंग के लिए, लेकिन मैं कलकत्ता पहुंचा सही सलामत कि मैं पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा और वहां पर जो मेरे रास्ते में जो भी मुझे चाहिए था वहां पर जाके ठीक करना था, जो मेरी गैप थी, मैं कितना सस्टेन कर पाया वो आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो जो आप बोल रहे हैं बहुत वो कॉन्सेप्ट रिलेवेंट है और उसको आगे बढ़ाया जाए और हम जैसे लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ये मेरा एक कहना है। अब ये हिमांशु चौधरी साहब शायद चले गए, तो अब कंक्लूसिव रिमार्क हमारे चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी से क्लोज करेंगे। जोशी जी का कमेंट नहीं सुना, जोशी जी का कमेंट सुनना चाहिए था। यस में कुछ बोलना थैंक यू वेरी चाहेंगे? मच अमिताभ जी। और गीता कांडपाल हैं, मेंढा साहब हैं, पूरन सिंह जी हैं, आप खुद हैं, नागेश झा जी हैं, चंद्रशेखर खान साहब, अभय कृष्णा जी, विनय जी। तो बहुत अच्छा लगा कि, और मैं इतना कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जैसे अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्किल गैप एनालिसिस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर ये होता है तभी जो है हमारी ट्रेनिंग यूजफुल कही जाएगी। और मिंडा जी ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है और मेरे साथ में मिंडा जी ने बहुत काम किया डीओपीटी में। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की ट्रेनिंग और भी ऑर्गेनाइज हो और उसमें सभी लोग प्रतिभाग करें, इससे बहुत फायदा होगा। नॉर्मली ट्रेनर्स में भी ये है कि वो देखते हैं कहाँ फायदा है वहां जाएं, लेकिन जो सब कुछ दिखता है वही सत्य नहीं है। बहुत से इंटेंजिबल थिंग्स भी होती हैं जो हम इस तरह के प्रोग्राम से लर्न करते हैं। स्पेशली हमारे साथ में इतने योग्य लोग हैं। गीता जी ने, मैं कहूँ कि जल में ही नहीं, पूरे डीओपीटी की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम किया, नैनीताल में अभी भी कर रही हैं। मिंडा जी ने, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र या उस साइड के ही नहीं, पूरे इंडिया में बहुत अच्छा काम किया और उसको एक ट्रेनिंग एज ए टूल ऑफ शोइंग प्रॉब्लम
सॉल्विंग टूल। ये बहुत अच्छा योगदान है आपका। और थैंक यू इसी सर। तरह चंद्रेश्वर खान साहब, थैंक यू नागेश सर, झा थैंक जी, यू वेरी तो मच। आप सभी इस तरह के मिंडा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक बार आएंगे तो हम ही लोगों को फायदा होगा। कहते हैं कि हम बहुत कुछ लर्न करते हैं नई जनरेशन से। गीता जी और आप लोग नई जनरेशन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दोनों आगे आएं और इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैं अलग से, जी मैं पहले सेशन में सबको ही एक पासवर्ड दे देता हूँ, आई एम 16 इयर्स यंग लर्नर, तो मैं भी 16 साल का हो जाता हूँ ट्रेनिंग रूम में। नहीं, थैंक यू। मैंने आपका सीआरपीएफ में भी बहुत अच्छा सुना। मैं जाता हूँ थैंक यू सीआरपी सर, थैंक एकेडमी में, और रियली आप जो सही है उसी को कहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव व्हाट अदर्स विल थिंक। वो इमैटेरियल है। वी शुड से एज ए ट्रेनर वी आर हियर जस्ट फॉर द कॉज ऑफ ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग इज जस्ट टू गिव सम आउटपुट आल्सो विद टर्म वेदर इज द प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच, बट इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और करते रहिए। और यू गीता सर, जी थैंक को यू भी आपकी। जोड़िए। आपने गीता जी भी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब गीता जी से सर नैनीताल में मुझे तो आपका बहुत आपसे ही अच्छा बहुत कुछ वर्क है सीखने को, रियली। और सर ऐसे कम जोशी लोग सर। होते हैं जैसे एक कि बार मैं गीता डेडिकेशन जी के से मैं साथ गीता जी 1-to-1 करते हैं। करूंगा, एंड आई विल लाइक टू विजिट यू। नैनीताल का मैंने बहुत सुना है, जी सर। बहुत अच्छा सुना सर है। अभी तो मैं नैनीताल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने छोड़ा है जॉब और मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। लेकिन जोशी सर से और अमिताभ सर से तो बहुत सीखा है मैंने, ये क्योंकि तो सर के साथ कई स्टेट्स में ट्रेनिंग ये कराई है। गंगोत्री है, ये दोनों गंगोत्री है। यहाँ विजय कुमार जी, आपका परमिशन हो तो मैं अभी पर्व त्योहार का महीना है, मैं कुछ मंत्रोच्चारण कर लेता हूँ आप लोगों के लिए सर। सर इट जरा विल टेक प्लीज ओनली शॉर्ट 2 में, मिनट। क्योंकि मेरी 2 फैमिली मिनट। हुई है, नहीं तो मेरे घर में हारमोनी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके कोई ओके। कुछ समझे। आप चले मिंडा साहब हैं, थैंक यू। आप चले, बाकी हम लोग हैं, वी आर हियर टू लिसन नागेश जी एंड अदर्स। एंड थैंक यू वोट ऑफ वेरी थैंक्स मच। बाय चंद्रेश्वर खान नागेश जी साहब। 2 मिनट के लिए मैं करूंगा, नागेश जी तो आदरणीय, नागेश जी जरा शॉर्ट में प्लीज। हाँ नहीं, वो तो शॉर्ट नहीं है, ये गणेश स्तुति है और शिव जी की आरती है, 2 मिनट लगता है सर इसमें। यस सर, यस सर। मैं पाठ शुरू करता हूँ। ओम तस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंद विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभिष्ट सिद्धि अर्थे जपे विनियोग ध्यान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। और उसके बाद शिव जी की आरती है, 1 मिनट और। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम, सभी से मैं आप पिछली विचार बार करना नहीं चाहूंगा। आए, हमारे शुरू में ही ये भजन नहीं हुआ, इसलिए हैकर घुस गए। एग्जिट, अभी अच्छा मतलब ये एग्जिट बिहेवियर में आ गया। हाँ, बहुत अच्छा आ गया। थैंक यू सर। और इस तरह से रात्रि करेंगे हम लोग तो हम लोगों को डिस्टरबेंस कम होगा। और अब अभय कृष्णन जी भी अब एक अच्छे विद्वान मेरे बीच में हैं, लेकिन हम अभी चंद्रेश्वर खान से अंतिम शॉर्ट्स मतलब आशीर्वाद लेना चाहेंगे। बहुत बहुत चंद्रेश्वर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंढा जी तो चले गए, लेकिन आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं उनको कहना चाहता था कि वैसे मेंढा उनका नाम है, तो उसके आगे यदि ए लगा दिया जाए तो एमेंडा। तो अपने अपने जीवन में क्या क्या हम एमेंड कर सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने सुना वो भी सुन लेते तो या सुना दिया जाएगा बात में कि बहुत बढ़िया से चीजों को रखा गया। और जोशी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही
intangible is much more important than tangible. If intangible gain is not there, tangible will never come. तो ट्रेनिंग में ये भावना, ये साधना रख करके चलना पड़ता है कि इंटेंजेबल जो है वो यदि गेन हो रहा है तो बहुत तरह के टेंजेबल गेन्स जो हैं जिनके लिए हम लोग आतुर रहते हैं, जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन समझता है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, निकाल रहे हैं, निकालते जाएंगे। ट्रेनिंग को परफेक्टली ज्ञान को मेजर कर पाना कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, तुरंत अभी नहीं हुआ है, हो सकता है बाद में हो, तो ट्रू इवैल्यूएशन इसका कभी हो नहीं पाएगा। यदि मूल्यांकन के चक्कर में हम पड़ जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीजों को हम नहीं कर पाएंगे जिसका फायदा हमें होता है। जैसे खाना खाने से हमको क्या लाभ होगा और हम खाना नहीं खाएं तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। मैं जिस तरह से ट्रेनिंग में हूँ वो ये है कि ट्रस्ट एंड ट्रेनिंग मूव टुगेदर एंड दैट ब्रिंग्स टीम वर्क। तो जहाँ ट्रेनिंग नहीं है वहाँ बहुत तरह का अविश्वास पनपते रहेंगे और अविश्वास रहेगा तो वहाँ कोई टीम वर्क नहीं हो पाता है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती है, जिसके तरफ नागेश जी इशारा कर रहे थे। आज का बड़ा अच्छा चला, गीता जी यहाँ बैठी हुई हैं, तो इन सारी चीजों को चूंकि हम लोग इसमें अपना जीवन दे रहे हैं, ये एक तो कुछ जो कैरो मॉडल है कि किस कंसेप्ट में ट्रेनिंग हो रहा है, इनपुट क्या है, रिएक्शन क्या है, आउटपुट क्या है, वो करते रहेंगे। लेकिन ये वास्तव में यात्रा अनंत की है। किस व्यक्ति में क्या परिवर्तन आ जाएगा कुछ चीजों को सुन करके, हो सकता है कि वो फीडबैक में नहीं दिखे और 10 साल के बाद आपको बोले। तो ये विश्वास रखना बड़ा जरूरी है। और जहां कहीं ट्रेनिंग को इस तरह की ट्रेनिंग एज ए वे ऑफ लाइफ, हम यदि अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो सारी चीजों का रिन्यूअल होता है। व्यक्ति का रिन्यूअल कैसे होगा, वो कैसे रिन्यू हो, that is also the process of that is the process of training कि we renew ourselves, and the moment we renew ourselves we are ready to do new things, innovation, that means idea in action। तो इन भावनाओं को भी बहुत सारी चीजों में हम टूल्स निकालने का कोशिश करते हैं, निकालते रहें, लेकिन उसके अलावा वो भी चले और ये भी चले। और if there is a change in inlook and outlook, many kind of things are many things will take place। और हम सभी उसी प्यार और आशा के साथ सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है कि हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टिविटी, इंटर डेवलपमेंट। तो आप सबों को ऐसे, आप सभी ज्ञानी हैं, लेकिन जिस भाव से आपने मेंढा साहब को सुना, मेंढा साहब को धन्यवाद। अमिताभ जी जिस रिगर के साथ और बड़ा अच्छा किया कि आपने तुरंत जो पिछली दफा जो हुआ था गड़बड़ी, शायद नागे सहाय रहते तो गड़बड़ी नहीं होती, क्या ठिकाना उसको तुरंत जो आपने वो ब्रिज कर दिया, ये ब्रिज करना ये आपके इनिशिएटिव से हुआ और उन्होंने भी सेंस ऑफ कंप्लीशन प्रूव किया और हम लोगों ने भी सेंस ऑफ कंप्लीशन प्रूव किया। तो मैं विथ फुल हार्ट थैंक यू वेरी मच। ये दीपावली का समय है, बाहर केवल दीप नहीं जगमगाए, अंदर के जो हमारे
कुछ जो भी जो चल रहे हैं उसको चलते हुए हम सभी फील करें और वो आंतरिक प्रकाश के साथ बाहरी प्रकाश को देख सकें। उन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मित्र चले गए हैं लेकिन जोशी साहब यहाँ हैं। अंत और मम विकसित करो, और अमिताभ जी तो इसको जानते हैं पूरा। अंत और मम विकसित करो, अंतर करो। जब तक आंतरिक विकास नहीं होता है, जो बिना संगोष्ठी ज्ञान का नॉलेज का शेयरिंग उसके बिना हो नहीं सकता है, तो बहुत सारी चीजें रहते हुए भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अनोखे अवसर पर जब हम लोग मिल रहे हैं, अभी हमने दीप जलाया है और फिर जागल्यमान जो दीप हमेशा प्रकृति ने दिया है सूरज का, उसकी आराधना करेंगे। और वहां भी आप देखेंगे कि अकेले हम लोग हैं जो अस्ताचलगामी और बाल रवि जो जब डूब रहे हैं तो उनको भी प्रणाम, और जब उदय हो रहे हैं तो उनको भी प्रणाम। इस तरह से जाते हुए प्रकाश को, आते हुए प्रकाश को नमन। और आप सबों को इस चमन में, ज्ञान वारिद चमन को, जिसको अमिताभ जी बड़े पल्लवी पर पुष्पित करते हैं। आज अखौड़ी साहब नहीं आए हैं, उमेश जी हैं, अभय जी हैं, नागेश जी हैं, विनय जी हैं, और विनय जी इतना कार्य करते हैं, जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और इस दिशा में हम लोग लगातार चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक तो हो ही जाता है कि ट्रेनिंग में, जैसे मैं सुन रहा था नागेश को, ट्रेनिंग में आते वक्त भी जो ये भी बोलता है कि अब क्या सीखेंगे, क्योंकि आगे पीछे हम घूमते हुए लोगों से सीखते हैं, तो जाते वक्त उनको हम पूछते हैं कि कैसा रहा। बोला सर सुबह में बड़ा गलती बोल दिए थे, आप कहीं से सुन लिए क्या? हम बोले सुने नहीं, अच्छा ही किया आपने, क्योंकि इन चीजों को आपको हमको समझना ये प्यार भरी आशा कल के लिए। तो मैं, उन्होंने भी कहा कि जो ट्रेडर का ये काम है कि मैं आपको कुछ दे पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा इस काम को करने के लिए सीखा है, तो आई एम शेयरिंग माय लर्निंग। And to close, if we create an environment of caring and sharing, share and share, that makes Ratan Tata. That makes the people of caliber and higher share and share. Ultimate सबों का देखिएगा, और अचीवर जब वो जाने लगते हैं तो उनके मन में यही रहता है कि कितना हमने शेयर किया और कितना हमने शेयर किया। ज्ञान यदि थोड़ा है तो परिवार के साथ, if we share with care and care to share, many good things will take place. Thank you so much. God bless us all. बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और प्रणाम। थैंक यू सो मच अमिताभ। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला गीता कांडपाल जी और अभय कृष्णन साहब से। मैं चाहूंगा कि अगली बार ये दोनों हम लोगों को कोई सब्जेक्ट दें और वाटर सैनिटेशन पे हम लोग सुनेंगे। गीता कांडपाल का रविवार के दिन और शनिवार को अभय कृष्णन साहब का सुनेंगे। बिल्कुल सर, जब आप आज्ञा दें सर मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, बहुत दिन हो गया वाटर सैनिटेशन पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम कर लेंगे। उस दिन भी बहुत सुंदर समय रहेगा। आपका एक फोटो छोटा सा लगेगा और हम उसको एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग लखनऊ के बहुत से लोगों को जोड़ लेंगे इसमें। और अभी कृष्णन साहब का भी सुनना चाहेंगे और उनके स्पेशल विषय पर। तो अगली बार फिर मिलेंगे
सभी को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। और सभी बहुत सारे लोग आए थे। हमने इस बार वेबिनार को यूट्यूब में और फेसबुक में नहीं डाला कि पिछली बार हैक हो गया था। फिर भी आज 16-17 आदमी जुटे। इसके लिए बहुत 17-18 आदमी जुड़े थे। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारा ज्ञान हम लोगों ने सीखा। विजय मेंढा ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बताया, बहुत अच्छा किया। हिमांशु चौधरी ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। जोशी जी, गीता कांतपाल, सभी लोगों ने इसमें जितना योगदान दिया, सभी के लिए धन्यवाद। चंद्रेश्वर खान साहब को चरण स्पर्श, उमेश जोशी जी को चरण स्पर्श। और हम लोग फिर अगले शनिवार को नए उत्साह से मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सर।